this x directly apple, the next time banana will be fetched, then x will be compared with banana. Yes. So x equals to banana. Yes, the condition will be true. Then break will be executed. So after the execution of this break statement, then control directly go there after the or outside the loop. So only apple will be displayed here. For the continue statement, here you can see if I put it here continue instead of break statement at the same condition. So here first time apple will be printed, second time banana will be fetched, and then banana will be compared with this x value. Then x equals to banana, condition will be true, then this continue statement will be executed. After the execution of this continue statement, it will directly transfer the control at the condition part of this blah or this if so for statement. Okay, so here again next statement next element will be fetched, cherry will be fetched. So x in cherry will be fetched, so x will be compared with cherry. No, now condition will be false. So at this time next printf statement will be executed, so cherry will be printed. So at the iteration of the banana, the condition will be true, then at the time continue will execute. So after the statement, after this continue statement, the statement written like print x, that will not be executed. So it will terminate the current iteration, the iteration of banana, when banana is compared with x. That iteration has been terminated after the execution of the continue statement. Okay. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Sir. Okay. So here just I want to ask from you another kind of things. Just let me know. We can also specify break and continue without using if else. Listen. Just I am specifying for x here x in fruit. Okay, fruits, and then I'm directly specifying here break. Break can also be used with while loop, है ना? Break. So what will be the output? I'm directly printing, just first I'm printing here print x, and then I'm also printing x here. What will be the output? Apple. For apple. All are agree? Is there anyone who is disagree? Here you can see at the first time x will be fetching apple value, so apple will be printed here. Now break will be executing without any condition. We are directly executing break, so it will terminate this for loop and then control directly go there. So there is a no statement, then it will print only apple. Okay, but in the case of continue, what will happen? If I write continue instead of break, then what will happen? Yes. Yes. Can anyone tell me the output? What will the output for the continue, writing continue here instead of break? Cherry. Yes. Here you can see first time print x. That means x will be printed. X is apple. Then continue will be executed. Then continue directly transfers this control to this line. Okay. So this statement will never be executed. Okay. So next time banana will be displayed. Next time cherry will be displayed, but this statement will never execute, as continue will block this statement. Okay. So this is a role of continue. Okay. Any issue? No, sir. No, na? Okay, fine. So I'm also explaining one of two example here with the loop. So first कुछ program दिया था ना मैंने एक दो. I think क्वेश्चन था प्राइम नंबर वाला था ना, एक्सरसाइज टू राइट अ प्रोग्राम फॉर द प्राइम नंबर. So this is a solution. So it is okay to all. What is happening here in the program? Because write a program to find a given, whether a given number is prime or not. How we can write the code? First, those who don't know how to start, first you see the problem what is written. Check whether a given number is prime or not. So it means we need to take one number as an input. So here you can see in the first line we are taking one number as an input. So here we are taking first one number input and then we are storing this value into the x. Okay. Now a one temporary variable we have taken as a flag, as a true. Why we are taking it as a true?
as I'm already written here, that's why I'm explaining. But if you don't know why we have to take this flag, then we have to think about the logic of the prime numbers, how we have to check a given number is prime or not. Then you will realize that there is a need of taking flag or something else we have to do, and there may be a different way to write a code. So first of all, I want to ask anyone who So can what tell is me the. flag? Yes, flag actually here it is a temporary variable. Here you can see it is just a temporary variable or variable in Okay. order to store some value. Flag is the name of the variable, okay, or Okay. identifier, okay, where initial value is true. Okay, so don't think about this, then think about the need of this, actually why we are writing here. Actually, if you are not understanding the concept or logic, then you are unable to write the code. Even if you have understood the syntax or all these things related to the programming, then still you cannot write a program. So in order to write a program, first of all we need to the understanding of the logic, or we need to understand the concept or procedure or algorithm. So as we have, you have, I think all of you have written the algorithm for identifying checking a given number is Sir, what prime is or the not. use of flag? Okay, अच्छा ये फ्लैग को अभी भूल जाओ, आप तो लॉजिक की बात करो पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द behind the prime number. Okay, we will also discuss this flag. Okay, this is a question I am explaining you in different way we can write this code. Okay, so logic is that if we are having n suppose I am having a 37, n में 37, if you have entered n is a 37, then how we can check this number is a prime. So concept says you have to divide this number from 2 to 36. Is it okay? Means we have to divide this number 2 to 36. So we can take this variable I that is varying from I equals to 2 to 36, and we are dividing it and we are checking the remainder is 0 or not. Is it okay now? Yes, sir. So when we got the remainder 0, that means this number is not a prime number. ये clear है ना सबको? एक्सक्यूज मी सर, सर हमें 36 तक चेक करने की क्यों जरूरत है? हम तो 18 तक ही चेक करेंगे तब भी चल भाई जाएगा. रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ. ये चीज मैंने ऑलरेडी किसी ट्यूट, हालांकि मैंने ट्यूट लिया है, आई थिंक EV8 का मैं ट्यूट लेता हूँ, मैंने वहां पे डिस्कस किया था. दिस इज नॉट राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट द simplification of the program. It is a time about to understanding or writing a program first. Okay na? यस सर. Okay, that's why I'm not going at that part. Is it okay na? यस सर. So पहले सबको बनना चाहिए, फिर अपन उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे. ओके ना? ओके सर. ओके, सो व्हाट इज योर बैच नंबर? सर EB10. EB10, कोई बात नहीं, वेरी गुड. ओके, so how we can check a given number is prime or not? Okay, so if you want to check a given number is prime, that we have to divide that number from 2 to 36, as we cannot check for 1, as 1 every number is divisible by 1. Okay, so we are just starting from 2 to 36. If we are dividing it and then we are checking is it remainder is 0, then how we can know when we are running a loop from 2 to 36 that number सर is ये divisible by फ्लैग 0? लिखना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, ऐसे आपने वेरिएबल साइन कर रखा है ना बस. हाँ भाई जरूरी नहीं है, विदाउट फ्लैग भी तुम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर और कोई लॉजिक भी लिख सकते हो. बट सर अगर लगाने की जरूरत ही नहीं थी सर ये तो. अच्छा मेरे को ये बताओ, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नंबर डिविजिबल बाई है कि नहीं है? ये इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करोगे जब लूप रन कर रहे हो 2 to 36? सर अगर हम रेंज में लेंगे, पहले लिख देंगे फॉर आई इन द रेंज, उसके बाद लिखेंगे x मॉडुलस i 00. अगर हो गया तो वो ट्रू प्रिंट कर देंगे हम स्टेटमेंट, नंबर इज प्राइम, एल्स कर देंगे नंबर You इज can नॉट post प्राइम. your code in the chat box, then I will see. Okay, without using a break and all these things, then please post your code, है ना? ओके सर. Then we will discuss on that. Okay, okay. So here what we are doing here you can see we are dividing this n with I. So I have written here code for loop, and we have to run the loop from 2 to 36. So 2 to 36 we have written here 2 and x equals to 36. That why
x is excluded as x is 37. So when we are writing range, when we are writing value in this block, then the value, if I'm writing at 37, then loop will be run from 2 to 36. Is it okay? Then we are fetching this I value from this range value, okay, and it is divided from 2, and then we are checking it is 0. If it is 0, then we are making this flag value to false in order to store this information. Then again we are running this loop for 3, 4, 5, 6, 7. Whenever this number x, that is input 37 or any other number, it is divisible by this with any value between this range, then this flag value will become false. If number is 37, then you can see 37 is not divisible by from 2 to 36. Then in that case this block will not be executed. ये block कभी execute ही नहीं होगा. अगर x equals to 37 है तो ये ब्लैक कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना. जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फ्लैग की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, ट्रू. तो अब मैंने लास्ट में ये ब्लॉक, ये जब लूप खत्म हो जाएगा, लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, देन लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा है इफ फ्लैग. तो फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू होगी, इसका मतलब क्या है, ये कभी भी नंबर डिवाइड ही नहीं हुआ. दैट नंबर x इज नॉट डिवाइडेड विद 2 to 36 और 2 to n-1 और 2 to x-1. इससे किसी से डिवाइड ही नहीं हुआ. इट मींस इफ इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 to x-1, दैट मींस नंबर इज प्राइम. तो यहाँ पे ये ट्रू होगा तो दैट मींस नंबर इज प्राइम, और ये फ्लैग 0 होगा और सॉरी फ्लैग फॉल्स होगा, इट मींस ये डिवाइड हो चुका है किसी ना किसी नंबर से विद इन द रेंज 2 to x-1. So that means it is divided with any number between 2 to x-1. That means the number is not a prime. So we have displayed here number is not a prime number. Okay, that's why here in order to store that information, number is divided between any range. So in order to store this information, we have taken here flag variable. So I am again repeating, this is a one way to checking a given number is prime or not. There may be some other way in order to check a given number is prime or not. So yes, is there any query, anyone having any query regarding it in understanding of this question on how to write a program for checking a given number is prime or not? Anyone have any query? Yes. अच्छा, किसने पूछा था मेरे को अब ये फ्लैग का कुछ और फ्लैग की लिखने की जरूरत है क्या? Who has asked? Who has posted the question? सर मैंने पूछा था सर, आदित्य शर्मा. सर मैंने अगर इसमें 2 पास करेंगे तो गलत आएगा ना? क्या पास करोगे? 2 वैल्यू दोगे ना. 2 इज अ प्राइम नंबर ना. हाँ, तो 2 प्राइम नंबर है तो लूप कहां तक रन होगा हमारा? 2 तक ही होगा बस. 2 तक होगा. तो 2 पे हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स होगा. ये 2 तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना भाई. 2 अगर मैं 2 लिखूंगा यहाँ तो 2 विल बी एक्सक्लूड, दैट कंडीशन विल बी फॉल्स, देन फ्लैग विल रिमेन ट्रू, है कि नहीं? ये 2 पे लूप रन होगा कि नहीं होगा? 2 इफ आई एम राइटिंग इन द रेंज 2,2 देन लूप विल रन और नॉट? नहीं होगा ना. यस सर, नहीं होगा. ओके, नहीं होगा ना. 2 तो एक्सक्लूड हो गया ना रेंज से. ओके, गॉट इट, थैंक यू. है ना. तो 2 पे भी ये ट्रू देगा ना, तो 2 पे इट विल प्रोवाइड यू करेक्ट वैल्यू. हाँ, अब फ्लैग. हाँ सर, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे होगी? क्या कह रहे हो? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे होगी? हाँ, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ऐसे होगी. इफ आई एम राइटिंग हियर फॉर, ये तो आई थिंक मैंने फॉर लूप में एक्सप्लेन भी किया था, फॉर आई इन रेंज, इफ आई एम राइटिंग हियर 5, 4 कुछ भी लिख रहा हूं, तो ये रन होगा लूप आई इक्वल्स टू 0 से, बाय डिफॉल्ट 0 से रन होगा 4 तक. ओके, इफ आई हैव स्पेसिफाइड हियर रेंज वैल्यू लाइक 1 to 5, दैट मींस स्टार्ट वैल्यू आई स्टार्ट होगा 1 से और रन कहां तक होगा? आई इक्वल्स टू 4 तक. तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है. तो इसका ये ऐसे बना लेता है एक्चुअली. इसको ये लूप को जब मैं लिख रहा हूं फॉर आई इन रेंज 1 to 5, तो इसका आंसर बनता है आई इक्वल्स टू आई इन 1, 2, 3, 4. ओके ना, ये कॉमन नहीं आएगा. तो ये ऐसे बनेगा ऑटोमेटिकली, एक एक वैल्यू फैच करता जाएगा.
तो ये मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हेन आई हैव एक्सप्लेन द फॉर लूप. आई थिंक यू आर रिमेम्बरिंग द थिंग्स. आपको याद है ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था आई थिंक. सर अगर हम x को हम 5 लेते हैं तो वो 2 से लेके 2, 3 और 4 रन करेगा ना, और उसके साथ देगा कि 0 आ रहा नहीं आ रहा. अगर 0 नहीं आता तो वो 2 दे देगा. बिल्कुल. तो ये मैंने सीक्वेंसेस आपको एक बार बताया था, उसमें आपको याद होगा सर रेंज के लिए मैंने एक बार बताया था फॉर लूप. आई रिमेम्बर द थिंग्स. मैंने एक लाइन रेंज वाला बताया था. तो सर whatever values we are taking inside that bracket of range, those values are excluded. Like हाँ, लास्ट सेकंड वैल्यू एक्सक्लूड होगी. मैं एक स्लाइड था, मैंने याद नहीं आ रहा मेरे को कहाँ पे था. आप लोगों को याद है क्या किसी को? सीक्वेंस वाला एक स्लाइड था एक. सेकंड ये है, ये देख सकते हो. What will happen when we have specified the range? So range 3 specified करोगे ये ऐसा बनेगा 0, 1, 2. If you are specifying 1, 5, then it will become as a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 है ना. ये क्लियर है ना. नेगेटिव नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो आप. जैसे नेगेटिव मैंने डिक्रीमेंट करना है, ये इंक्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट. 1 2 5 लिखूंगा तो ये इंक्रीमेंट होगा 1 से 1 1 से ऑटोमेटिकली. मेरे को 2 2 से इंक्रीमेंट करना है. मेरे को स्पेसिफाई करना है i की वैल्यू 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, फिर 8 हो. देन हाउ वी कैन डू? वी कैन स्पेसिफाई हियर 2, एंडिंग वैल्यू इज 9 रख दो. एंडिंग वैल्यू 9, सॉरी एंडिंग वैल्यू 9, एंड देन इंक्रीमेंट कितने से हो? 2 से. तो आप देखोगे 2 4 होगा नेक्स्ट टाइम. पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऑटोमेटिकली होगा. इज इट ओके? yes sir. ठीक है ना. सो प्लीज you refer this slide. I request you all of those who are getting some problem in this, so please refer this slide again. What is the meaning of specifying this range here? है ना. Is it okay? Yes yes sir. Yes, sir. हाँ, इस पे और किसी को डाउट है? फ्लैग का कोई और बोल रहा था, फ्लैग वाला कुछ डाउट है? सर फ्लैग हाँ बोलो. फ्लैग यूज करना जरूरी थोड़ी ना होता है सर. विदाउट फ्लैग आप बताओ, कोई ऑप्शन बताओ पहले, तो मैं फिर देन वी विल डिस्कस. सर अगर हम पहले ही ये कर दे इनपुट लेने के बाद इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, उसके बाद सर रेंज में सेम जो आपने लिखा है वही लिखेंगे. अगर हमारा मॉडुलस आई इक्वल टू 0 आ जाता है. नहीं, आप तो स्टेटमेंट बताओ. व्हाट स्टेटमेंट आई शुड राइट हियर सर इंस्टेड ऑफ आप फ्लैग? जैसे आपने सर लिख रखी है फॉर आई इन रेंज. हाँ 2, x लिख देंगे, या जो हमने नंबर लिया है हमने वेरिएबल पहले इनपुट करने को कहा है वो लिख देंगे हम int. So what I should write here instead of this statement for I in range, what I should write? For I in range 2, x लिया है ना वो x. ये स्टेटमेंट तो सेम है ना, इसमें कोई चेंज है हाँ क्या? इसमें कोई चेंज नहीं है सर, इस अगली में भी कोई चेंज नहीं आएगा. हाँ देन उसके बाद सर हम कर देंगे प्रिंट x, इज नॉट अ प्राइम नंबर. इस किसके फ्लैग के अंदर? नहीं सर फ्लैग तो यूज ही नहीं कर रहा ना मैं अभी. तो if मैंने सर statement पहले ही में पहले ही x के बाद इस- मैंने ये बोल दिया कि अगर इस- if x आप is if greater statement- than 1. नहीं, आप ये बताओ मेरे को, यहाँ पे else लगा रहे हो if के बाद? नहीं सर मैंने शुरू से देखो सर x is equal to int इनपुट. नहीं, ये आप मेरे को डायरेक्ट बोलते जाओ, ये लाइन करेक्ट है, इसमें कोई चेंज है? सर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने फ्लैग यूज ही नहीं किया. मैं फ्लैग की जगह लिखूंगा if x is greater than 1. यहाँ पे फ्लैग को काट के मैं लिखूंगा if x is greater than 1. if x is greater than 1, फिर और उसके क्या बाद लिखोगे लिखूंगा for I in range. वो जो सेम आपने लिखा है वही चलेगा इसमें लूप में. तो if के अंदर, if के बॉडी के अंदर आएगा ना ये फॉर लूप? हाँ सर if की बॉडी के अंदर आएगा. हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? सर वो फ्लैग की X, चलो दिक्कत X मैंने फ्लैग की 37 एंटर किया, मतलब सॉरी X मैंने 37 क्या, X मैंने 36 एंटर किया. चलो बताओ क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग? अभी सर मैं पूरा लूप तो लिखने दो, फिर मैं बताऊंगा ना आपको. हाँ हाँ बताओ चलो. सर उसके बाद जो आपने सेम लिखा है इफ नंबर मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे x, इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे प्रिंट करना है इसके अंदर, है ना? हाँ जी सर.
x is फिर सर not a प्रिंट कर देंगे हम i कॉमा टाइम्स नंबर डबल मॉडुलस i इज अ नंबर, क्योंकि सर उसके बाद हम ब्रेक देंगे और एल्स लिख देंगे नंबर इज अ प्राइम नंबर। नहीं तो इस इफ का एल्स बनाओगे ना आप यहाँ पे। हाँ सर, इसमें फिर एल्स सर बनाने की जरूरत ही क्या है, दो बार प्रिंट कर देंगे ना, पहली बार प्रिंट में हम लिख देंगे नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, हाँ उसके बाद दूसरी प्रिंट में लिखेंगे आई, जो हमने नंबर आई ले रहे हैं रेंज के अंदर, हाँ कॉमा टाइम्स नंबर, दो बार वो कॉलन मॉडुलस के साइन आप अपना आई। अपना कोड लिख के तो भेजो, कोड उसमें चैट बॉक्स में, मैं बोल तो सर रहा हूँ कोड इतनी देर लिख से। के आप सर कोड लिख के भेजता हूँ, रुक जाओ सर, मैं चैट बॉक्स में तो भेजो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप लिख के भेजो भेज तो। रहा हूँ सर, भेज। सर इसमें एक चीज सर, हम्म जैसे सर इसमें फॉर में सर ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे फॉर आई इज ग्रेटर देन सम नंबर। फॉर में नहीं लिख पाओगे, ये आपको लिखना पड़ेगा वाइल में। सर इसमें फॉर में यही फॉर्मेट चलता है, आई इन रेंज। बिल्कुल, ये रेंज के साथ काम करता है एक्चुअली, रेंज वैल्यू के साथ, है ना। इसके लिए आपको दूसरा लूप यूज करना पड़ेगा, वाइल लूप। ठीक तो है ना। सर ये जो 2, x लिखा है हमने, हम्म तो इसमें 2 और x इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है? 2 इंक्लूडेड है, x एक्सक्लूडेड है। और सर x को भी इंक्लूड करना पड़े तो x+1 करना पड़ता है इसमें? x+1 करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये प्रोग्राम जावा कर सकते हैं। हाँ क्या कह रहे हो। अगर हम चाहें तो प्रोग्राम जावा में जावा में सेम नहीं चलेगा, सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा आपको फॉर का, बाकी का हाँ सर, सेम बिल्कुल रहेगा। ये तो आता है। हाँ तो बस सेम रन हो जाएगा, आप रन चेक कर लेना। ठीक है, लॉजिक सेम होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स चेंज होते हैं, लॉजिक सेम रहता है। ओके ना, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ हाँ Sir, I one small doubt in flag, sir. How are we using flag in if statement without any relational operator? नहीं तो फ्लैग इज जस्ट ए वेरिएबल नेम ना, वी हैव यूज्ड हियर रिलेशनल ऑपरेटर एज ए इक्वल, डबल इक्वल Yes. ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर ही तो है ये। No, no, sir. The last statement, sir. If flag. अच्छा, ये फ्लैग का वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो कंडीशन कैसे डिसाइड होगी, ट्रू और फॉल्स पे ना। Yes, sir. तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लैग के अंदर ट्रू दे दिया तो ट्रू हो जाएगा, Okay, sir. तो ट्रू ही तो इवेल्युएट होगा। Okay, तो okay, व्हाट sir. इज द देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई एनी रिलेशनल ऑपरेटर ना। Okay, sir. It will automatically do that, sir. हाँ हाँ, Okay, sir. रिलेशनल ऑपरेटर भी तो आपको ट्रू और फॉल्स ही देगा ना, तो ये डायरेक्टली Yes, दे रहा sir. है ना फ्लैग, ये Yes, डायरेक्टली sir. दे रहा। यू कैन राइट लाइक दैट, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, तो भी तो ये ट्रू ही देगा अगर ट्रू होगा तो। Yes, sir. So what is the need of writing that equal statement? We can Oh, directly write na flag. okay, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Very good question. Yes, ठीक है ना? Okay, so सर I think एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर। बेसिकली ये जो फ्लैग वेरिएबल है, ये बस ये बताने के लिए कि एक भी बार ये इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है बस या नहीं हुई है। हाँ कि नहीं हुई है, बस बस बस, that is the role of the flag variable, just, है ना, nothing else. Instead of using flag variable, you can use break statement. Here same thing you can do with the break. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ब्रेक वगैरह और आई को मॉनिटर करके रख लो, ब्रेक यूज कर लो, ओके, and then monitor the I. Then, when this break will be executed, then this loop will be terminated ना। यस सर। जब ब्रेक टर्मिनेट हो जाएगा तो ये लूप रन नहीं होगा, कहां तक, x-1 तक जाएगा ही नहीं ना। इट मींस यहाँ पे कंडीशन यू कैन राइट इफ i is less than x x-1, सॉरी, i is less than x-1, मतलब 36 तक गया ही नहीं है ये। If it is not gone till 36, that means number is प्राइम not a prime. तो यहाँ पे आपको number is not prime लिखना पड़ेगा, not prime, और यहाँ पे prime लिखना पड़ेगा। Okay, you can write some different way. There is a no issue है ना for writing in different way. You can write. Okay ना? Okay. So now I'm going to start the new topic. Okay, so okay, so now next topic is our Python collection or sequences.
there are different kind of sequences or collections used in the Python that is basically equivalent to the arrays in some other programming language. चल रहा है सर मेरे वाला भी. हाँ, hello, is anyone said something? Okay, so there are different kind of collections or sequences you can use like हाँ, hello, कोई query है क्या किसी का? Is anyone having any query? Excuse me, sir. हाँ भाई बोलो तो. Yes, am I audible? Yes sir, you are audible. Yes sir, you are audible. Yes sir, you are audible. ठीक है. Then you can say first is the list. Okay, so it is just a collection of ordered and unchangeable item, allow duplicate members, and the next one is a tuple, third one is a set and dictionary. These kind of collections we have to study. First we have to start from the list. So what is list? List actually it is just a sequence of. हाँ भाई बोलो तो क्या बात है? सर वो आवाज मेरे पास सर ब्रेक स्टेटमेंट लगा के करे तो हम. हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड. ओके, एक बार सर देख सकते हो आप इसमें. अभी अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर देख लेते हैं. ठीक है सर. ओके फाइन. सर एक इसका क्वेश्चन था लिस्ट वगैरह का. हाँ सर भेज दिया मैंने, चैट पे भेज दिया वैसे. हाँ आई विल सी इट, जस्ट वेट, है ना. सर इसमें इनपुट ले सकते हैं लिस्ट को? हाँ ले सकते हो ना. यूजर इनपुट दे लिस्ट का. हाँ ले सकते हो, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेना पड़ेगा. ऐसे आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते उसको. ओके सर. ठीक है, डायरेक्टली नहीं ले सकते, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. वो भी अपन देख लेंगे बाद में, रुक जाओ पहले, है ना. ओके सर. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो कैसे आप लोगे, वो भी तो एक है ना. ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से लेना पड़ेगा बस, जस्ट, है ना. ओके, सो मैंने देखा आदित्य आपका कोड आपने ब्रेक वगैरह यूज किया हुआ है ना. यस सर, वो फ्लैग की जरूरत ही नहीं है सर कोड में. अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब अगर आप ब्रेक यूज को, तो मैंने वो लिखा ना, ब्रेक के थ्रू भी तो मैंने लिखा ना. अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू नहीं पता है, देन हाउ वी विल स्टोर द इंफॉर्मेशन. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ब्रेक, वो सॉरी फ्लैग. सर पेपर में ये तो नहीं आएगा ना कि यूज करो फ्लैग ही. नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा. अगर आपको कोई एक इंटरव्यू और एग्जाम में कोई पूछेगा, वो वहां पे पूछ सकता है लॉजिक टेस्ट करने के लिए कि आपको कितना आता है, कि फ्लैग यूज करके दिखाओ. नहीं वो ऐसा नहीं बोलेगा फ्लैग, वो बोलेगा कि आप करना है, देन आप बताओ. अच्छा ठीक है सर, है ना, ऐसा बोल सकता है वो. ओके. देखो क्वेश्चंस आपको वो किस ऐसे इसलिए नहीं पूछ रहा है कि आपको कितना आता है, वो इसलिए पूछ रहा है आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है एक्चुअली, है ना. यस सर. ओके वीडियो के पाइथन नहीं कर रहे हैं. हाँ भाई क्या कह रहे हो? जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आए पाइथन में लिखें. आवाज स्लो आ रही है, वॉइस इज स्लो एक्चुअली. सर जरूरी है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए पाइथन में करें, ज्यादा में कर सकते हैं. वो जब जॉब इंटरव्यू में जाओगे, तो वहां पे तो आपको लिखा होगा किस लैंग्वेज में आपको करना है. यहाँ पे अपन पाइथन में ही करना है. ठीक है, वहां पे वो मेंशन कर देंगे कि आपको इसमें करना है या यू आर फ्री फ्रॉम द लैंग्वेज दैट इज ओके ना, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, है ना. ओके, so here you can see list, it is just a sequence of item or collection of item where we are making here a different item we are keeping in the list. As when we are going to market, then we have to create a one list of item that we have to purchase from the market. So like that we can see this is item number 1, so we can keep at the 1 position, and then here we have not written something, and then here we have made that item number 3 at this position and 4th at this position, like at that. Whatever the position we have specified in the programming, we have to take in different way. So these are the just items. So how we have to do it in the programming, that we have to see here. So list structure in programming represented with the starting index from 0. Okay na. So every item, if you are keeping these element here 68.8, so this is the item that will be marked as index 0. So this is item is 0th item.
and this is a one item, this is a second item, this is a third item, this is a fourth item, है ना? So these are all item are stored in this ordered way. Means this is an item at the first index and this is item at the second index. So all the item will be stored in the ordered way. Okay. So here, what are the types that you can store in this list structure? That you can store a same type elements or different type element. You can see, as in the single list, you can store integer value as well as float value, integer value as well as string value. So different types of elements you can store in the list. Okay. Next, length. Length of the list is fixed and you can also change it, or it will be variable. Okay, so both the things can be happen. Similarly, you can also modify the elements of the list. It means list is mutable. Okay, if it may be unmutable, immutable. That means you can also not change the item. If you don't want to change, then it will not be automatically be changed. If you want to change, then it will be changed. Okay. So different types of operations you can perform on the list. So here you can determine if an element is exists in the list, or list is empty, what is the length of the list. So these different kind of operation, you can insert the element, replace the element of the list, and you can also append the element in the list. So these are a different kind of operation. Here these are examples. Suppose this is a list, it is given. Okay, now you want to get the value of index 4. So what is the value stored at index 4 that you want to obtain? So that you can obtain as a 50. So this is actually a retrieve operation, that you are retrieving any element from the list using a index value. Okay, that operation you can perform in the list data types. The next, you can insert the element at a specified position. Suppose you want to insert this 25 value at the index 2. So initially you can see this is a 0th index, this is a 1 index, this is a 2 index. It means you want to insert the element at the position of 2. But what will happen with this 30? So when you are going to insert this 25 at the position 2, then 30 will be shifted down. So here you can see 25 will be inserted here and 30 will be shifted down. So each and every element written later of the 30 or from the 30 will be put it down one index. Okay. So 30 will be shifted to the third index, and here you can see 40 will be shifted to the fourth index, and 55 shifted to the fifth index. As here you can see in this given example, like 50 is stored at the fourth position, so it will be automatically be shifted next. Okay. Similarly, you can see you can replace the element at the given position. Suppose you want to update a value of the element of index 4. Okay. So suppose at the index 4 we have written some value. Here you can say we have written 55 at the index 4. Okay. Now you can update with this 55. So 55 value will be placed at this position, or then 50 will be eliminated. You can assume in that way. Okay. Similarly, you can remove the element from the list. If you want to remove this 60 value, then you can specify that value and then you can remove. Then the list will become like 60 will be removed from this list. Automatically 70 will be shifted up, and one position up. Okay. So these kind of operation you can perform on the list. So there are predefined functions that you can use directly to perform these operations. We will see later these functions. Okay. Next is things like list traversal. You can traverse or you can visit an element of the list one by one. Okay. The visiting, you can start from any index. It will be started from first to last, or last to first element, or between the element also. For example, here suppose you want to perform search operation in the list. You want to search the element 50. It is available in the list or not. You can do it by checking. You can first check first element. It is 50. No. Then you can go to the next element 20. That is not 50. Then you can go to the third element. It is also not 50. Then you can go to the next element and then next. Then here you can see it is actually 50 elements. So means you have identified that element. Then you can say the element is exist in the list or not. Similarly, if you want to identify the sum of the elements of the list. So here these are the elements are given here in the list. Okay. Okay. Now you want to identify the sum of the list. So how you can identify? You can first fetch this first value. Okay. Then you can go to the second value. Then when you are fetching the second value, then second value and first value will be added. Then the result will be 30 here. Okay.
then next third value you can fetch, then after fetching, then you can add with the previous result, then 30 plus 30 it will become 60, so 60 will be there. Now next fourth value is 40, so 60 plus 40 will be 100, so 100 will be. In that way you can identify the sum of all the elements given in the list. These kind of traversal you can do in the list, है ना? So how we can do it? So just it is an MCQ. So you can answer what will be the range of index value for the list of 10 elements. What will be the range? 0 to 9. 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 Next, which one of the following is not a common operation on the list? You can see as access, you can access the element, it is correct. You can replace, you can append, you can insert, you can delete, but you cannot perform interleaving. Interleaving means you want to access the element from the one list alternatively, and you want to do the same thing on the second list or something else. Okay, so that is operation you cannot perform in the directly on the list. Okay. Okay, so next is which of the following would be the resulting list after inserting 50 at the index 2? B, sir. Which is the correct option? B. Sir, B. Sir, B. B? Yes, sir. B. Okay. Is anyone is disagree with this? So B is the correct answer. Okay. Okay, fine. So now list actually we have seen it is a mutable linear data structure, and item are stored in ordered way. Okay, and when we are creating a list in Python, so how we can create? We have to use square bracket and specify the element inside this square bracket that you want to store. Okay, so this is an example. Here you can see example 1, 2, 3. So here we have created one list of 3 elements where we have stored 1, 2, 3. 1 is the integer value, 2 is the integer value. Okay, and 3 is the also integer value. But here we have created another list, but here we have stored 1, 2, 3, but in the string format. So these are the string element in the list. Okay, as we know, we can also store the mixed element in the list. So here you can see apple 50 true. So true is the Boolean value. It is a Boolean value, and it is an integer value, and it is a string value. So we have here stored different types of elements in the list. So what is Diptesh? You are saying? Sir, the code that he pasted in the chat box, Okay, I tried this it is out. for and Aditya, na? This is for Aditya, yes, na? sir. Yeah, I have not checked the logic, but whatever the logic I have displayed by using break directly instead of flag, that will work actually, है ना? You can check it. Yes, sir. Okay. Sir, that is working fine. हाँ हाँ वो काम करेगा, है ना? हाँ, फ्लैग की sir. जगह पे आप डायरेक्ट ब्रेक यूज करो और आई को कंपेयर करो कि वो n तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, n-1 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, then it will provide you correct, है ना? ब्रेक इसलिए है ना कि अगर हमारा उस तक हो गया तो आगे का ना हो, बस ऐसे. हाँ, तो break is means if you are not using break, that means the use of break, that means it will suppose we are running a loop from 0 to 10,000 or 99,000 like that, or suppose we have entered the value n equals to 7. If you are using flag, then this loop will run for 99,000 till the 99,000 it will run, na? Yes, it sir. should be terminated at 7, means after the 3 or 4 or 5 iteration it should be terminated, na, in worst case. So in order to save time, we can use break at that time. Break will terminate the rest of the iterations, है ना? सर मेरा भी फ्लैग यूज करोगे तो सारा का सारा रन होगा. ओके, ठीक, तो ब्रेक यूज करना ज्यादा बेटर है. हालांकि इस कोड को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग सम अदर टाइप ऑफ लॉजिक दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर करेंटली. ओके ओके, यू कैन थिंक. हाँ भाई, अब ये भी चल रहा है सर. इसमें बता तो रहा है ये 111 से प्रॉब्लम आ रहा है. नहीं सर, चल रहा है, पूरा चल रहा है. कोई नहीं, सर चेक कर लेना. मुझे पता नहीं सर कि मैंने कॉपी ठीक से किया कि नहीं, क्योंकि इसमें टैब्स वगैरह कॉपी नहीं होता. भाई इंडेंटेशन एरर आ रही है सर. कोई बात नहीं है, उसे छोड़ो, अभी उसे छोड़ो, अभी इस पे फोकस करो. ठीक है सर. एट द बॉटम यू हैव रिटन रेंज सर्च 0 to 2. मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, है ना? अभी इसमें लूप में लग गए ना, ये
छोड़ दो, अभी भूल जाओ, इससे फालतू टाइम चला जाता है. You can see, you can access the element. If you want to access the element of the list, you can specify the index and the bracket here. If you have specified 0 in the index bracket, then it means you are accessing the first element. So it means if you are doing this print, and this is a list LST, and you have specified here 0, then what will be the result? That it will print 1. Okay. If you have changed this index to, then it will print 0, 1, 2. What is the value at the index 2? That is 3. So it will display 3. Okay. So that is accessing the element. So you can access the first element by 0 specifying, second element by 1 specifying, third element by specifying 3 here. Okay. Na? An empty list you can create by specifying the bracket like A equals to, I have specified empty. Then it means A is a list, but it does not have any element. Okay. You can also specify the negative indexing. Negative element is specified, or -1 is denoting the last element actually. So here 3 is specified, -1 also. -2 refer the second last element, and so on. है ना? ऐसे you can refer here -1 LST. It is the meaning of third. So the 3 is the element that will be fetched using -1. If I specify -2 in the index, then it will fetch second last element. So in reverse order, you can also traverse a list by specifying the negative index automatically. Is it okay? You can specify the negative index, and then you can access the element in the reverse order. Okay. Range search you can also specify. Suppose you want to access the element from second index to third index, then you can specify like LST, sorry, 0, 1, 2. ये एलिमेंट है ना, मैं लिस्ट बड़ी ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है. तो इंडेक्स कहां से होगा? 0 to 4. Suppose you want to access the element from 2 index to 4 index, then you can specify 2 to 5. Okay. So the value stored at the second index, that is 0 index, 1 index, 2 index पे क्या है हमारा? 3 है, और 5 index पे, 4 index पे क्या है? 4 है. Okay. इंडेक्स एक्सक्लूडेड रहेगा, इट विल बी एक्सक्लूडेड. रेंज इंडेक्स में हमेशा लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूडेड रहता है, तो कीप इन माइंड दैट थिंग्स. ओके. सो इट विल प्रोवाइड यू वैल्यू फ्रॉम 2 to 4 इंडेक्स. सो हियर वी हैव स्पेसिफाइड 0 to 2. इट मींस 0 इंडेक्स वैल्यू आएगा, 1 इंडेक्स वैल्यू आएगा, 2 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे. इज इट क्लियर? यस सर. ओके फाइन. Yes, sir. These are the operations that you can perform on the list directly. You can see here fruit is the banana, apple, cherry. These are the list elements. Here we have stored element in the form of string. है ना? So here fruit 2. It means we want to replace this fruit 2 element with coconut. So fruit 2 means 0 index, 1 index, 2 index. So cherry will be replaced with coconut. Okay. So the resultant list, if you are printing after this operation, then this list will be displayed like that. Is it okay? So replace operation you can perform in that way. Okay. So how you perform delete operation in Python? So you can perform directly del, del. Del is, it is a function directly you can use, like it is delete is fruit, FRIT and 1. So it will delete the first element. So first element 0, 1. So 1 is apple na. So it will be eliminated, then resultant list will be banana and cherry. So 2 value will be remain in the list. Okay. Next, if you want to insert something in the list, then you can specify index value and the element that you want to insert. So fruit dot insert. So it will insert at the second position. So second position is cherry. So cherry will be shifted right. So the resultant list will be banana, apple, pear, and then cherry will be shifted right. Okay. Append, it will end, it will append the value at the end of the list. So here you can directly insert आना कैसे? हाँ बोलो. insert वापस आना है एक बार. इंसर्ट में आपको पहले इंडेक्स स्पेसिफाई करना है या पोजीशन कहां पे इंसर्ट करना है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द एलिमेंट. ठीक है. तो एलिमेंट स्पेसिफाई करोगे तो ओरिजिनल लिस्ट तो हमारी ये है बनाना, एप्पल, चेरी ना. तो सेकंड पोजीशन पे कौन है ऑलरेडी इन द प्रीवियस लिस्ट? चेरी ना. चेरी. दिस, तो चेरी क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? पेयर. तो अपना रिजल्टेंट लिस्ट क्या होगा? 0, 1 सेकंड पोजीशन पे पेयर, अब चेरी थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा.
ठीक है ना? यस सर। ओके, अपेंड में लास्ट में अपेंड कर देगा, इट विल अपेंड द एलिमेंट एट द लास्ट, ठीक है, ये डिफॉल्टली लास्ट पे अपेंड करेगा, तो फोर्थ पोजीशन जो भी होगी उस पर अपेंड कर देगा, ठीक है। In the sort, it will sort the list according to the alphabetic. If list is number, then it will sort in ascending order. ठीक है, ascending order में sort करेगा, तो यहाँ पे alphabetically sort करेगा. You can see apple A is having small value in the comparison to the other one, so A will be first, then banana will be second, and cherry will be third. Okay, तो ये will automatically sort कर देगा element को. Fruit dot reverse, it will reverse the string. वो sorry, it will reverse the list. सो रिवर्स में मतलब चेरी फर्स्ट आ जाएगा, एप्पल फर्स्ट, चेरी, बनाना एंड एप्पल, ये और रिवर्स हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। सेकंड इज इट ओके? रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा ये, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, ये तो लेकिन थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है ना, बनाना, ये तो होना चाहिए चेरी एप्पल बनाना होना चाहिए ना सर। क्यों सर? एक सेकंड, मेन आपकी थी जो फ्रूट थी वो बनाना एप्पल चेरी थी, तो उसको ही रिवर्स ये मेरे को लग रहा है रिवर्स ऑर्डर में इसको लेके चल रहा है कि इसको लेके चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, ये किसको लेके चल रहा है? just wait, I'm doing here also. You can see, suppose this is a list, suppose I put it here. हाँ सर, क्योंकि अगर सॉर्टेड उसके बाद लिस्ट लेकर के चल रहा है तो सॉर्ट करने के बाद तो वो सही आएगा। सॉर्ट का जरूरी नहीं है, मैं यही देखना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, जो सबसे ऊपर वाला एग्जांपल है उसके रिस्पेक्ट में है तो b dot reverse रिवर्स है ना, प्रिंट c। अब ठीक है ना सर? ये सॉर्ट वाले में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेगा ना, जो डॉट हाँ, अल्फाबेटिकल और नंबर, वो अभी देखो दोनों में बता दे रहा हूँ। इसको देखो, ये नन दे रहा है इसमें, तो रिवर्स वाला कौन सा फंक्शन लिखा था यहाँ पे ना, सही लिखा है ना सर? वो इन प्लेस सॉर्ट करता है, तो आपको सर c इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रिंट b कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं तो ऐसा तो हाँ, ये नहीं, लेकिन वो रिटर्न तो करेगा ना, प्रिंट b करोगे नहीं तो सर, वो रिटर्न वैल्यू नहीं देता कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो। मैं b को प्रिंट करके देख ले रहा हूँ। तो हेलो पहले आ गया, फिर 4, फिर एप्पल। इसको मैं एक काम करूँ, यहाँ पे h ये लिख देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। सर ये फंक्शन चलाते ही बस डायरेक्ट कर देता है रिवर्स। हाँ, तो ये रिवर्स कर दे रहा है डायरेक्ट, ये देखो ओरिजिनल वेरिएबल को। हाँ, ओरिजिनल एलिमेंट्स को, हाँ जो एलिमेंट्स है ना। हाँ, अब सॉर्ट वाला कैसे काम करेगा? सॉर्ट को जैसे मैं कर दूं a डॉट सॉर्ट, ये सॉर्ट कर दो, तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 7 लेता हूँ और यहाँ पे 5 लेता हूँ, देन यू कैन सी द रिजल्ट प्रिंट a, है ना, यू कैन सी, तो ये सॉर्ट कर दिया, ठीक है ना सर? हमें सी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ डायरेक्ट नहीं है, वो तो मैंने ऐसे चेक करने के लिए लिखा था, ठीक है। यस सर। ओके ना? यस सर। ओके, सो इट विल रिवर्स। ये आई थिंक मेरे को लग रहा है ये इसके लिए लिया है, इसलिए मैं भी डाउट में था, है ना। ये आपने जैसे पहली वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करी होगी तो उसका वो हो गया, फिर उसके बाद दूसरी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। हाँ, इसीलिए वो इसके लिए आउटपुट दे रहा है। इज इट ओके ना? सो सर तो ये है यहाँ पे गलत, इसको अगर इससे मानना है तो इसका आंसर अपना आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ चेरी चेरी वही रहेगा, बनाना एप्पल चेरी, एप्पल आ जाएगा, एप्पल और ये बनाना, ठीक है। ओके ना? डॉट सॉर्ट डॉट रिवर्स जो है वो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते, मतलब टू स्टोर अ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। नहीं तो ऑटोमेटिकली अपन सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल लिस्ट ही सॉर्ट हो जा रही है ना। सर ये जो डॉट रिवर्स आपने किया है, कौन से वो सॉर्टेड वाले लिस्ट के रिस्पेक्टिव में है कि जो सबसे पहली वाली है? इसका आंसर, एक काम करो आप, इसका आंसर ऐसा मानो, चेरी बनाना एप्पल ना मान के इसको इसकी जगह पे आप इसको इसकी जगह पे मानो एप्पल, ऐसा मानो एप्पल, और इसकी जगह पे मानो आप बनाना। हाँ तो सर ये तो उस केस में ना जो सबसे पहली वाली है जो फ्रूट की है, मतलब उसी को लेके सारे के सारे रिजल्ट दिए, उसी को लेके सारे के सारे रिजल्ट दिए, इसलिए इसको ऐसा मत मानो कि जस्ट प्रीवियस वाले के लिए ये गलत। तो लेकिन अगर सर सॉर्टेड वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग करते तब चेरी बनाना एप्पल होता, तब वो सही होता। बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक।
तो आप इसको करेक्ट आंसर करेक्ट मानो, इसके रिस्पेक्ट में कोई सारी की सारी ऑपरेशन इसके रिस्पेक्ट में की है ना, तो अदरवाइज गलत अंडरस्टूड हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है सर। सर आपने ये वाली पीपीटी अपलोड कर दी है क्या? अपलोड अभी नहीं किया, जस्ट करूंगा, इसके बाद कर दूंगा। ठीक है ना? अच्छा ओके सर, ओके सर, हाँ थैंक यू। ठीक है, हाँ भाई बोलो। Sir, I'm asking that while you were writing the program, you wrote C equals to fruit dot reverse, and when you printed C, it was showing an error. हाँ नहीं, C equals to error नहीं दे रहा था, वो none दे रहा था। हाँ तो सर वो ऐसे हम करें या फिर डायरेक्ट ही प्रिंट करें? नहीं, आप तो डायरेक्ट प्रिंट करो ना, वो मैंने चेक करने के लिए लिखा था वो। That's I have just for understanding myself actually. Here I have written na printf hello. Printf does not provide anything na. So in the printf statement you can see C equals to printf. So just I am checking what is the value that is written by this printf statement. That's I am going to check it. Okay. So it will provide you none. Here you can see in the first line you will get none answer. Here you can see this is a result. Okay, print hello or print. It will provide you none value. Here you can see hello and none. Is it okay ना? मैं एक लाइन हटा दे रहा हूँ यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा। Now you can check. ये पहले hello print हो गया और value written by this C, that will be C none, and then we are printing C, that will providing you none value. तो ये तो चेक करने के लिए मैंने लिखा था just, है ना? Okay. It is just only checking, not for anything, है ना? Okay. अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना, then what we will do? तो पहले सॉर्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो व्हाट वी विल डू? सर पहले a डॉट सॉर्ट अगले a डॉट रिवर्स डालेंगे। तो यहाँ पे आप एक काम करना, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू देते हैं शायद, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू स्पेसिफाई करते हैं। किसी को याद है ना? मैं चेक करके देख रहा हूँ। हाँ ये देखो हो गया। तो यू हैव टू पास द आर्गुमेंट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। व्हेन रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू दैट मीन इन दिस केस इट विल सॉर्ट द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इज इट ओके ना? फॉल्स लिखेंगे तो सर पहले सॉर्ट लिखेंगे तो आई थिंक वो डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, तो वो असेंडिंग में ही देगा, असेंडिंग में ही देगा क्योंकि डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है ना, इसलिए। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स होती है। ठीक है, इफ यू आर नॉट राइटिंग फॉल्स देन इट विल ऑटोमेटिकली विल प्रोवाइड यू असेंडिंग। तो इफ यू डोंट वांट टू राइट देन यू कैन नॉट राइट, है ना? इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना? हाँ बोलो। हाँ भाई सर सॉर्ट के अंदर हम लोग ये डाल सकते हैं a डॉट रिवर्स। ए डॉट रिवर्स लगाओगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में डाल देगा स्ट्रिंग को, सॉर्ट थोड़ी ना करेगा। अच्छा तब भी वही, अच्छा वो रिवर्स कर देगा, लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेगा। नहीं सर, a डॉट रिवर्स के अंदर डालिए a डॉट सॉर्ट, तो वो पहले सॉर्ट करेगा। सॉर्ट ए डॉट सॉर्ट क्या देगा? कुछ नहीं देगा, नन देगा, तो रिवर्स में नन आ जाएगा, वो तो अलग ही रिजल्ट देगा। फिर यहाँ पे लिख रहे हो ना ए डॉट सॉर्ट लिख रहे हो ना, ये तो फिर अलग ही रिजल्ट देगा, ये तो कुछ अलग ही हो जाएगा। फिर देखो एरर ही दे दिया। सॉर्ट ओके फिर रिवर्स हो जाए। नहीं यार, सॉर्ट ओके सॉर्ट वाली वैल्यू कुछ थोड़ी ना देगा, तो नन आएगा, वो तो कुछ नहीं आएगा। देखो ठीक है ना, और उल्टा दे रहा है, नो आर्गुमेंट बोल रहा है, कुछ है ही नहीं ना। ए डॉट सॉर्ट विल बी नथिंग ना, a dot sort will not provide you any value because the value is sorted in a। आप ऐसा कर सकते हो, ये ऐसे करके पास कर सकते हो, पहले a dot sort लिख दो, ऐसा काम कर सकते हो, ये that will work I think, है ना? you can do it। अब आप a dot sort लिखो यहाँ पे, ये हो जाएगा। नहीं हाँ, a dot sort and a dot reverse ये वर्क करेगा, है ना? ये प्रॉपर देगा। ओके ये दे दे, ठीक है ना? ऐसा कर सकते हो। उसके ब्रैकेट में मत लिखो, उसको बाहर लिख लो, ए डॉट सॉर्ट लिखो, देन ए डॉट रिवर्स कर दो, तो पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, देन वो रिवर्स कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डिसेंडिंग में आ जाएगा ना। यस सर। ओके, ऐसा कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा है कि 2 लाइन लिखने के अलावा तुम एक ही लाइन लिखो ना। ठीक है, सॉर्ट विदाउट सॉर्ट फंक्शन के कर सकते हैं, विदाउट सॉर्ट लूप के थ्रू कर सकते हो। आप लूप के थ्रू सॉर्ट कर सकते हो। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे हम लैब में कि सॉर्ट करो लिस्ट को विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट फंक्शन। ओके ठीक है, फिर आपको सॉर्ट करना है, वो फिर आपको सॉर्ट फंक्शन एक्चुअली कैसे बना है वो इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज और डेटा टाइप्स इज टपल्स। ओके, सो टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट बट द डिफरेंस with the list it is immutable। okay,
It is also linear ordered, but the elements whatever the element you have stored in the tuple, that cannot be changed later. Okay, list we are specifying with the using square bracket, but tuple we have to specify with the parenthesis. So here you can see we have created this tuple 10, 20, 30. Here you can see we have created the tuples for some different values. So same thing we have done in the list. So same thing you can do here also, है ना? Sometimes you want to create a tuples for single element, then how you can create? If अच्छा मैं आपसे यहीं पे पूछ लेता हूँ, जैसे लिस्ट बनाना है तो लिस्ट तो बन जाएगी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 एलिमेंट, तो एक लिस्ट की ये लिस्ट बन जाएगी. इफ यू आर displaying then A will be displayed. Okay ना? बट टपल बनाओगे आप एक एलिमेंट की ऐसे करके तो वो टपल नहीं होगा. Listen, ये this is not the tuple. If you are going to print, बिल्कुल 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 वेरी गुड, है ना? तो इसको आप प्रिंट करने B को गए तो ये टपल प्रिंट नहीं होगा, ये सिंपल एलिमेंट एज प्रिंट कर देगा, है ना? यू कैन सी, है ना? प्रिंट मैं कर रहा हूं, प्रिंट A और प्रिंट B, यू कैन सी, है ना? तो ये करूंगा, ये सिंपल वैल्यू 1 प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये लिस्ट टपल नहीं है. तो आपको यहाँ पे कॉमा रखोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट बन के आ जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है? टाइप भी आप चेक कर सकते हो ऐसे करके. तो टाइप इट विल प्रोवाइड यू, इन दिस केस इट विल प्रोवाइड यू टाइप ऑफ B विल बी इंटीजर, इट इज नॉट टपल. If you have specified comma, then you can check the type of B will be tuple. Okay na? So that's why in order to create the tuples of one element, you need to specify the comma. So that is correct, and this one is correct, and this one will be wrong. It is not a tuple. An empty tuple is represented by set of empty parentheses. Here you can see, है ना? Okay. You have access in the list, that same thing you can access here. Nums 0, it will provide you this element 10 value. Is it okay? Same thing we have done in the list also. Okay, same thing you can do here. But in the list, if you are doing like suppose here A is a list 1 2 3, है ना? Or if you are doing here A1 equals to 4, that will work. Okay, but in the tuple, suppose this nums is a variable or tuple, and if you are doing nums और nums का one element आप change कर रहे हो, if you are changing this element with 4, then it will provide an error because it is immutable. So we cannot change the element of the tuple. Is it okay na? Sir, actually we have another class. Yes. So I'm just stopping Sir, here. it's 12:40. Yes, sir. We have a class. Yes, I'm stopping, है ना? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना. So next we will continue in the next class. I think directly we will start from the tuples, है ना? In the next class. Is it okay na? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, So sir. exercise this PPT I will upload. So please read this PPT, and then we will directly go there at the explanation of the concept. Okay. Okay, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Thank please you, stop sir. the recording. Thank you, sir. थैंक यू सर. सर थोड़ा सा Okay. बाद में एक और Thank you, बार ये sir. टपल वाली चीज समझा दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा